Hello everyone. Today in this video I'll be discussing with you all about, is obesity a risk factor for coronavirus? Are overweight people at greater risk from coronavirus? बहुत सारे सर्वेज और बहुत सारे रिसर्चेस जो कुछ महीनों में ऑल ओवर द वर्ल्ड हुए हैं, उससे ये पता चलता है कि जिन लोगों का BMI 25 से ऊपर है उनको ज़्यादा चांसेस हैं कोविड से इन्फेक्ट होने के। अगर वो कोविड से इन्फेक्ट हो गए तो सीवियर सिम्टम डेवलप करने के, या फिर उनका ज़्यादातर डेथ रेट उन लोगों का ज़्यादा है जिनका BMI 25 से ऊपर है। ये सारे रिसर्च जो ऑल ओवर द वर्ल्ड हुए हैं वो कंक्लूड करता है कि जिन लोग का ओबेसिटी है, जिन लोग ओवरवेट हैं, या आप ये कह सकते हैं कि जिनका 25 BMI से ऊपर है, वो इस पे रिस्क फैक्टर में आते हैं। एक सर्वे और एक स्टडी हुआ है यूके के ICU में, इंटेंसिव केयर यूनिट में, जिसमें से ये पता चलता है कि मैक्सिमम पीपल हु वर एडमिटेड एंड हु वर इन्फेक्टेड विद COVID-19, 35% were overweight, 32% were obese, and 7% were suffering from morbid obesity. That is 74% total percentage of people who were infected with COVID-19 and admitted in UK intensive care unit were having obesity, or they were overweight or having morbid obesity. Only 27% were of healthy BMI. There's another study which was conducted with the World Federation Obesity Unit, and that concluded that ज़्यादातर जिनका भी BMI 25 के ऊपर है वो ज़्यादा चांसेस हैं, डबल चांसेस हैं उनके COVID-19 से इन्फेक्ट होने के। इंडिया में जो लार्जेस्ट पब्लिक हॉस्पिटल है, वहाँ के डॉक्टर्स इन रोज़ ये नोटिस कर रहे हैं, या उन्होंने ये कंक्लूड किया है कि जितने भी उनके अगर 10 COVID-19 पेशेंट इन्फेक्ट होके आते हैं तो उसमें से 6 जो हैं वो ईदर दे आर ओवरवेट और दे आर ओबीस। सो एंड उनको ओबेसिटी जिनको है, और जो ओबीस पेशेंट इंटेंसिव केयर में अगर आ जाते हैं तो टू हैंडल दोज पीपल विद COVID-19 इज़ अपहिल टास्क। Why being obese is a risk factor for coronavirus? Once you are overweight, you have a lot of fat around you and your lung capacity reduces. आपने जब कभी भी किसी मोटे आदमी को देखा होगा तो वो हमेशा हाँफता है, थोड़ा सा भी चलेगा वो हाँफता है। क्यों हाँफता है? क्योंकि उसका फैट इतना होता है कि उसका लंग कैपेसिटी जो है ऑक्सीजन इनहेल करने का वो रिड्यूस हो जाता है, और शरीर को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो हमेशा वो प्रेशराइज रहता है मोटा आदमी कि वो सांस कैसे ले। थोड़ा सा भी चलेगा, शू लेसेस भी बांधेगा तो उसको सांस फूलने लगता है, बिकॉज पूरे जगह पे लंग्स के सराउंडेड, हर ऑर्गन के सराउंडेड फैट होता है। सो लंग कैपेसिटी कम होता है, बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो इसलिए वो हमेशा ब्रेथलेसनेस उसको जल्दी जल्दी होता है। और ऐसे में अगर COVID-19 का इन्फेक्शन उसको लग जाए तो आप समझ सकते हैं कि, जो कि अपने आप में एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना फेटल हो सकता है उसके लिए। What role fat cells play? Scientists have discovered there is an enzyme called ACE2 which is present in the cell, which is a way for the virus to enter the body, and this enzyme is present in adipose tissues or fatty tissues, which is there in large number of quantity in people who are obese. उनको उनका स्किन के नीचे एडिपोस टिश्यूज़ बहुत होता है, उनके ऑर्गन्स के सराउंडेड एडिपोस टिश्यू बहुत होता है, तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न वाई दे हैव हायर रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग द डिजीज़ और गेटिंग सीवियरली इल विद द डिजीज़। Is immune system affected too? Yes. The ability to fight the virus in obese people, that is the immune response is very bad. That is not that good just because of the inflammation. Obesity also often comes with other health issues like weak heart, poorly functioning kidneys, type 2 diabetes. So it becomes much more riskier for a patient who is obese plus have secondary lifestyle diseases as well. And if they infect this coronavirus, it becomes very, very severe. And taking care of such patients in hospital also becomes a task for the doctors in ICU, putting them to ventilator, handling their breathing issues, turning them, putting them under scan becomes too difficult.
in the end, I would like to tell you all that please try to maintain a healthy weight, take a balanced diet, exercise regularly, do whatever workout you can, and if you're unable to do it on your own, then take a professional help.